Basically from Pune. I'm currently studying design at Symbiosis Institute of Design. It was pretty normal, I guess. दिन में mom उठाती थी, then getting me ready, breakfast कराना, auto में I used to go school में auto में जाता था. Then school होने का used to go to drawing classes and drawing and Casio. Actually every day I used to go to play after class also. And then उसके बाद dinner करो और फिर हो जाता था TV देखो. Like it was the same routine basically. It has become more vocal, I guess. Like first she used to instruct me कि ऐसा ऐसा करो, like do this thing in a certain way. Basically instruct me to do things. But now I voice out my opinion, so voice out my opinion also. But like understanding level बढ़ा है. Handling my tantrums, I guess. Otherwise she handled it pretty well. Like she's a very strong person, so emotionally very strong. So one would be listening to music, like कुछ भी random Bollywood हो, EDM हो. मेल पे अगर spam में जाने का, spam delete करो. Just basically cleaning up everything and making sure ऐसे कुछ notifications नहीं है. First thing that comes to my head is EDM, like electronic music. उसमें सब genres है. Dubstep is one. Then dance music. Chainsmokers is like my favorite. Like the main factor in that is कि उसमें lyrics नहीं होते. During studying I needed music, like something playing in the background. तो वो I would end up singing the song and then वो focus इससे जाता है on what I'm working on. Biting skin. Because बहुत free time होता है और फिर उसमें कुछ करने को नहीं है. I want something to munch on constantly. Till the time I realize कि खून निकल रहा है, दर्द हो रहा है, then only I realize कि वहाँ I'm biting. It has become very involuntary for me. Nothing as such, I would say. It's like जो चल रहा है चल रहा है. Things were always taken care for me by parents and mostly mom. So as such I didn't have to worry about anything. I had somebody to consult, fall back to. So it's not that अगर कुछ हुआ तो I have to take the step forward to do it. So that feeling, that quality develop नहीं हुआ फिर. To earn money. I think that filmmaking is the easiest way I can make money आगे फ्यूचर में जा. आफ्टर 10th I took a this क्या बोलते हैं career counseling में aptitude test sort, an aptitude test, और उसमें पता चला that I am more lean towards the creative field. That was the thing that was found out. बचपन से I've been watching हिंदी films, so I know the like जो बड़े पर्दे पे देखने वाला feeling होता है having your film वहाँ पे कि if you're a filmmaker then society में भी तुम्हारा कुछ नाम होगा once you achieve something वैसा. तो मे बी दैट सोशली तुम लोग तुम्हारे बात करेंगे. आई थिंक दैट माइट बी वन रीज़न. सो आई हैव नेवर बीन इन अ लॉन्ग टर्म रिलेशन, लाइक नेवर बीन इन अ रिलेशनशिप बेसिकली. सो one would be being in a long term relationship, like giving it the time that is required, not just ki impulsive decision liya, this is not working out and just break up. Second thing would be to travel, I guess. Travel to relax, not to like for work purposes. I would not say work के लिए मिला तो good, but mostly relax and be away from where you're working, because I think I'll be doing something at one situated place. Third thing would be, I guess, winning either a national award or a filmfare, like film से related national award, or a filmfare, or either both. Like
You can consider me maybe the last person to speak up, like join in, because since like as I grew up, it was somebody higher than me only who used to command, like if it's a teacher or parents, so they used to tell me to do something and I used to do it. I don't use my brain tabhi. If they consider me equal, then I'm willing to give in my like whatever insights or अगर कुछ ओपिनियन है उसके बारे में, तो आई हैव बिन कंडीशन टू दैट. बट या वो दिमाग में रहेगा कि इस इवेंट्स के वजह से ये पर्सन का क्या इक्वेशन चेंज हो गया है मेरे साथ. टॉप प्रायोरिटी में भी आई एम नॉट सेइंग इट लाइक कि आई स्पेंड मनी एवरीवेयर इसलिए टॉप प्रायोरिटी है. इट्स लाइक आई हैव सीन माई मदर लाइक आफ्टर डैड पास अवे, तो उसके बाद आई हैव सीन हर ऐसे छोटी छोटी चीज़ों में लाइक सेविंग्स करना इन डेली थिंग्स एंड बीइंग इन दैट प्लेस कॉन्स्टेंटली. तो इट कैन बी एन अगेन एन इनवॉल्ट्री थिंग कि कंडीशन हो गया वैसे. इफ आई हैव टू गो समवेयर, सिटी जाना है या कोथरूड जाना है, आई विल थिंक फर्स्ट की ट्रांसपोर्टेशन, लाइक आई वोंट थिंक ऑफ कंफर्ट फॉर मी फर्स्ट. एक बार कोथरूड में इंटर्नशिप था मेरा एंड आई थिंक हाफ वे फ्रॉम विश्वनाथवाड़ी आई टेक अ बस जाने के लिए, दैट इज द क्लोजेस्ट टू माई हाउस. 2 किलोमीटर्स लेटर एट वन स्टॉप द बस ब्रोक डाउन, तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट देन आई वॉकड फ्रॉम देयर टिल कोथरूड बिकॉज आई डेंट वॉन्ट टू स्पेंड मनी ऑन अनदर टिकट, बिकॉज मेरा आने का पैसा फिर उसमें चला जाता ना, एक एक्स्ट्रा टिकट का पैसा लगता फिर उसमें. I won't sacrifice financial stability, I guess. I would like to reach to a point कि कुछ आगे नया करने को, what I want, वो करने को पैसा हो. It's not that I say it out loud कि money is on the top of my priority list. I don't state it like loudly. I don't show it, but वो दिमाग में है.